Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and respected parents, Assalamu alaikum. Today we are going to start lesson number 4 of Unit 5 of Iqra Applied Grammar Book 2. Dear students, let's start the proceedings of the lesson with the feedback segment of the homework that was given to you by me yesterday. And your homework is look at the picture and write what the people were doing at the time of an accident. आपने क्या करना था? आपने पिक्चर को देखते हुए ये बताना था कि लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंट कैरेक्टर्स उस पिक्चर के अंदर when the accident happened, जब एक्सीडेंट हुआ. So this exercise has already been done by me for you, and I hope that after getting this feedback there will be no difficulty for you regarding this exercise. So the sentence number 1, कामरान, अगर हम इसको कंप्लीट देखें तो कामरान वॉज पेंटिंग द बिल्डिंग, कामरान बिल्डिंग को पेंट कर रहा था. सेंटेंस नंबर 2, जैन एंड फातिमा वर क्रॉसिंग द रोड, तो जैन और फातिमा जो थे वो रोड को क्रॉस कर रहे थे. तलहा वॉज राइडिंग अ बाइसिकल, तलहा बाइसिकल को राइड कर रहा था. सेंटेंस नंबर 4, द वार्डन वॉज ब्लोइंग द विसल, वो जो वार्डन था वो विसल को ब्लो कर रहा था. व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, ये ऑब्वियस है, व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड वाली ऑप्शन आपके लिए. सेंटेंस नंबर 5, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग ऑन द बेंच. सेंटेंस नंबर 6 था हमारे पास ऑप्शन. आमिना एंड आयशा वर बाइंग वेजिटेबल्स. सेंटेंस नंबर 7, सफदर वॉज सेलिंग वेजिटेबल्स. और हमारे पास जो सेंटेंस नंबर 8 है, अम्मार एंड मुस्तफ़ा वर रीडिंग न्यूज़पेपर्स. अम्मार और मुस्तफ़ा वर रीडिंग न्यूज़पेपर्स. So dear students, I hope that you have done this exercise the same way as I did, and if there is any difficulty, that difficulty will be resolved after getting this feedback. Now it's time to move on to the next segment of this unit, which is Learn to Speak segment. But before moving to that segment, I just want you to look at the box of word bank in which we have different phrases, and these phrases are helpful for us while conducting the activity of Learn to Speak. So I just want you to look at this segment of word bank, and I'll read out the phrases for you, and inshallah ta'ala after this reading we'll proceed further with the actual activity of Learn to Speak. So our first phrase is cooking food, then offering prayer, watching news, eating lunch, calling with friends, doing homework, reciting the Holy Quran, standing in a queue, giving today's message, telling date, running here and there, preparing breakfast, feeding the children, making a noise, looking for book, asking for a break, taking rest, taking around, signing the diaries, chanting Asmaul Husna. Now it's time to move on to the next segment, which is very important segment of this unit, that is Learn to Speak. And dear students, as you already know that for this segment you need a partner to conduct this activity, and that partner may be your father, your mother, your brother or your sister. आपको पार्टनर की इसलिए जरूरत है that partner will ask question for you and you will answer these questions. And the second thing which is very important for you is that you will answer the question while using the structure of past continuous tense. चूंकि ये questions भी past continuous tense के structure में हैं, and your answer will be in that particular structure in which the questions are being asked from you. So in this segment we have 5 questions. इस सेगमेंट में हमारे पास 5 सवालात हैं, एंड आई विल मॉडल द एक्टिविटी फॉर यू, एंड द मॉडलिंग इज फॉर योर असिस्टेंस, नॉट फॉर यू टू कॉपी इट. माई रिप्लाइज इज फॉर योर असिस्टेंस ओनली. मैं जो जवाबात दूंगा वो जवाबात बच्चे आपकी रहनुमाई के लिए हैं, ना कि आप इसको कॉपी करें. यू विल जनरेट योर ओन आंसर्स रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस. आप इन सवालों को देखते हुए अपने आंसर्स को जनरेट करेंगे. So without wasting even a single second, let's start the proceedings of the lesson. So your question number 1 is, what were you doing when your teacher entered the classroom? And the possible answer for this question should be, I was chatting with friends
when my teacher entered the classroom. Question number 2. What were your siblings doing when you reached home? They were eating lunch when I reached home. Question number 3. What was your mother doing when you left for school? And the possible answer for this question should be, my mother was washing clothes when I left for school. Question number 4. What were your friends doing when the break ended? And the possible answer for this question should be, they were moving here and there when the break ended. Question number 5. What was happening when the Duai Agaz started? And the possible answer for this question should be, the students were making a noise when the Duai Agaz started. So dear students, now it's your turn to conduct this activity on your own. You will pause the video. You will conduct this activity with a partner at home, and then we'll come back, and then we'll proceed further with the next segment of this unit, which is ask and reply. So dear student, this segment ask and reply is quite similar to the unit number 4 ask and reply segment, और स्ट्रक्चर भी हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट रिप्लाईज का सेम ही है. So I hope that there will be no difficulty for you. We should start the proceedings of this exercise without wasting even a single second. So we have two basically part of this table. First we have the auxiliary verb was, and then in the second part we have an auxiliary verb were. So was I, he, she making a noise? तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा क्वेश्चन का वो ऐसे बन सकता है, was I making a noise, was he making a noise, was she making a noise. और इसका जो शॉर्ट रिप्लाई, जो शॉर्ट आंसर हो सकता है, yes I was, no I was not, या हो सकता है yes he was, no he was not, या इस तरीके से भी हो सकता है yes she was, no she was not. अगर हम सेकेंड पार्ट की तरफ देखें, वर, वी, यू, दे मेकिंग अ नॉइज, अब ये इसके जो क्वेश्चन बनेगा वो इस अंदाज में बनेगा, वर वी मेकिंग अ नॉइज, वर यू मेकिंग अ नॉइज, वर दे मेकिंग अ नॉइज. और इसका जो पॉसिबल रिप्लाई है या शॉर्ट आंसर है वो ये बन सकता है यस वी वर, और नो वी वर नॉट, या यस यू वर, नो यू वर नॉट, या ये ऐसे भी हो सकता है yes they were, no they were not. So now dear students, it's time to proceed further with the question and answer segment, and for this segment as well you need a partner. That partner may be your father, your mother, your brother, or your sister. That partner will ask question from you and you will answer these questions. I'll model the activity for you. This activity is very important for you to strengthening your structure of ask and reply question segments and short replies. So I'll model this activity for you, and that modeling is for your assistance. So your first question is, were you doing maths when the lesson started? And your answer, a possible answer should be yes I was, or no I was not. Question number 2, was your friend laughing when he heard a joke? And the possible answer for this question should be yes he was, or no he was not. Question number 3, was your mother working when you left for school? And the possible answer for this question should be yes she was, no she was not. Question number 4, was your brother watching TV when you reached home? And the possible answer for this question should be yes he was, or no he was not. Question number 5, were you taking lunch when the break ended? And the possible answer for this question should be yes I was, or no I was not. So dear students, it's your turn to conduct this activity on your own. You will pause the video. You will do
this activity the same way as I did, and then we'll proceed further with the homework segment of this unit, which is learn to write. So dear students, your homework for learn to write segment is write 5 sentences on what your friends were doing when the break ended. This first part. Second, write 5 sentences on what your family members were doing when you reached home. And third, write 5 sentences on what your teachers were doing when you entered the school. आपने क्या करना है, आपने इन तीनों टास्क को अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना है और हर टास्क में यू हैव टू राइट 5 सेंटेंसेस. आपने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही होगी तो आप इस मॉडल से भी हेल्प ले सकते हैं. जैसे टास्क 1 है तो आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है. जैसे कि यहाँ पर हेडिंग है, हेडिंग आप क्या देंगे, डूइंग्स ऑफ माई फ्रेंड्स व्हेन द ब्रेक एंडेड. उस हेडिंग के बाद आप ऐसे ही सेंटेंसेस को लिखेंगे. ये एक मॉडल आपके सामने रखा गया है. दिस मॉडल इज़ फॉर योर असिस्टेंस. जैसे एक एग्जाम्पल का सेंटेंस मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ. अली वॉज ईटिंग हिज लंच व्हेन द ब्रेक एंडेड. तो इस तरीके से आप रिमेनिंग सेंटेंसेस को भी करेंगे. ये मॉडल है, आप इससे हेल्प ले सकते हैं मगर आप इसको कॉपी नहीं करेंगे. ऐसे ही हमारा जो टास्क नंबर 2 है उसकी आप हेडिंग कैसे देंगे, डूइंग्स ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स व्हेन आई रीच्ड होम. आप ऐसे ही हेडिंग देंगे और ऐसे ही आप फिर रिमेनिंग सेंटेंसेस को करेंगे. जैसे एक सेंटेंस को मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ, माई मदर वॉज मॉपिंग द फ्लोर व्हेन आई रीच्ड होम. ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स आप रिमेनिंग सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे. अगर आप टास्क नंबर 3 की तरफ आएंगे उसकी भी आप हेडिंग ऐसे ही देंगे जैसे मैंने दी है, डूइंग्स ऑफ माई टीचर्स व्हेन आई एंटर्ड द स्कूल. आप ऐसे ही हेडिंग देंगे और उसके बाद आप रिमेनिंग सेंटेंसेस को करेंगे. आई रीड आउट द एग्जाम्पल सेंटेंस फॉर यू. सर खालिद वॉज स्टैंडिंग एट द गेट व्हेन आई एंटर्ड द स्कूल. और ऐसे ही आप रिमेनिंग सेंटेंसेस को भी देखेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट आफ्टर गेटिंग this model and feedback regarding the 3 tasks of learn to write segment of unit 5, there will be no difficulty for you. So it's time to say Allah Hafiz. Assalamu alaikum.